Hello. Hello everyone. Hello everyone. Welcome to Unacademy. So, am I audible to all of you? Am I audible to all of you? Okay. So, this is my first YouTube session. My name is Samrat Sir Mishra. I have been teaching to OPSC candidates since 3 years. Last year, some of my students they qualified for civil service interview. They have appeared for Odisha Civil Service interview, and some of them they qualified successfully. Now I have started teaching live in Unacademy Plus. You can use my referral code EASYOS to join Unacademy Plus, so that you'll be getting 10% discount upon your course fees. So recently we have started a course related to batch course. It was a batch course. You start OPSC Civil Service exam ପାଇଁ ସମୀକ୍ଷା. So ये pre-com mains ର course ରହିବ both for prelims as well as mains. It will be both for prelims as well as for mains examination. So you can join that course to continue your preparation with Unacademy. I will be taking Indian polity, constitution, geography and internal security classes for you. So as this is a very fast class regarding polity, I will discuss something related to polity. So that how to prepare and what should be your source. को book source आपण follow करिया दरकार. Regarding that I will discuss. The first thing समस्ते जानिथिबे कि लक्ष्मीकांत Yeah. So sorry for the inconvenience. Getting some technical issues, no problem. So let's continue with today's topic of discussion. Regarding strategies, I will launch another course. In that, I will discuss about how to prepare for civil service examination and what should be your sources, right? So today, let's start continue our discussion regarding constitution and constitutionalism. So sorry for the inconvenience. So first let's discuss the definition of a state. What is a state under the international law? What is the meaning of state under international law? Then only you can understand what is the requirement of the constitution. So first thing is that according to international law, to constitute a state, three things are required. The most basic and the important ingredients of a state are: first is the population, second in the territory, and the third one is the government. So first is the population. Why it is required? Because when you are establishing a state, definitely किछि population रहबा दरकार. जे पर्यंत हम पाखरे population नाहंती, up to that हमें state establish करि परिबानी. The territory in this case corresponds to geographical territory. So geographical territory पहले हमें कोन बुझंती? Let's say मु कहबी इंडिया रा geographical territory. इंडिया गोटे पर्टिकुलर जियोग्राफिकल टेरिटोरी अच्छी एंड स्टेट कहले आम स्टेट पे फर्स्ट सेकंड रिक्वायरमेंट इज द टेरिटोरी. जे पर्यंत जियोग्राफिकल टेरिटोरी हम पाखर नाही, वी कैन नॉट हैव अ स्टेट. द थर्ड इज द गवर्नमेंट. नाउ वी हैव पॉपुलेशन एंड द थर्ड
Next we have the government. Why government is required? Government is required to provide the governance. How can governance provide karibo? Na to the people it will provide the governance. So this is the basic definition or basic meaning of state according to the international law, and the meaning of state as per international law and as per constitutional law somewhat pakapaki same. Maybe किछि point discussion अच्छी किछि topic अच्छी जोटा discuss करवा दरकार the difference, but basically जदि हमें function देखिबा बुझवा दरकार कि international law और constitutional law अनुसार state भितर हमें basic किछि difference वर्तमान पई देखिबानी near future जोटी दरकार मु से विषय. The next is regarding function of the state. देखो पूर्वर स्टेट जेतबेले नथिला से समय केमति क्रिएशन हेतिला तो किछि लोक गोटे जगह गैदर हेकि रहउतले एंड गैदरिंग हेला परे से माने निजको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करिया पई से माने को भीतर किछि लोक रहउतले जो माने प्रोटेक्शन प्रोवाइड करथले से पर्टिकुलर जियोग्राफिकल टेरिटरी को प्लस से रीजन सिटीजन मानो. तो एई समय रे when the state provides protection, that is called police function of the state. The first and the basic function of the state is to provide protection to its citizens. First it will provide protection to its citizens, and the second it will provide protection to its geographical territory. कौन पाई हमको दरकार स्टेट निजो को प्रोटेक्ट करिया दरकार. मानिनियो तो I will give you the example of Galwan Valley case. Recently the Chinese aggression, the army of the Chinese army, समानकर aggression towards the geographical territory of India. So in this case, what the government, what should be the primary responsibility of the state? The first responsibility should be the state should provide protection. ये कहाँ को protect करिवो? The first it will provide protection to its citizens, and the second it will provide protection to its geographical territory. So basically, under the police function of the state, two things needs to be discussed. The first is the internal security, and the next one is the external security. So when you discuss about the police function of the state, at that point of time, internal security and external security of the country, it means police function कहले हमें बेसिकली तहले कौन बुझले कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करिवा. एटी प्रोटेक्शन किए कहा को प्रोवाइड करूची ना प्रोटेक्शन स्टेट बा गवर्नमेंट एटी प्रोवाइड करूची जियोग्राफिकल टेरिटरी को, प्लस ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करूची ये यार सिटीजन मानो. दिस इज द फर्स्ट फंक्शन. मानि नियंतो प्रोटेक्शन मिली गला फर्स्ट हमको. तो प्रोटेक्शन जदी मिली गला केते दिन पर्यंत एमति तो हमें केवल गवर्नमेंट रो काम तो रहबनी प्रोटेक्शन, या व्यतीत हमको डेवलपमेंट हवा दरकार. वी नीड इकोनॉमिक ग्रोथ, वी नीड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वी नीड हैप्पीनेस. सो फॉर दैट पर्पस द गवर्नमेंट इज देयर टू प्रोवाइड वेलफेयर फंक्शंस. वेलफेयर फंक्शन कहले कोन बुझंती? पूर्वरु हमको प्रोटेक्शन मिलिला. प्रोटेक्शन हमको कोन पई दरकार? प्रोटेक्शन इज रिक्वायर्ड फॉर टू एंश्योर freedom and to ensure liberty. When we are ensured with liberty and when we are ensured with freedom, then what we need, what is the next step? The next step is we need development in the society. We need development we need empowerment. We need liberty. We need freedom. We need economic growth, and we need economic development as well. So for that purpose, the different functions that will be given by the state, or the state, when the state will provide this type of functions, at that point of time, this is called a welfare state. इस समय हम स्टेट को कहते हैं वेलफेयर स्टेट. सो वेलफेयर रा मीनिंग कोन? वेलफेयर रा मीनिंग होची मैक्सिमम हैप्पीनेस टू द मैक्सिमम पीपल. ताले वेलफेयर स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केमते प्रोवाइड करछि जदि हम देखिबा ताले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपन डीपीएस पे देखिबे पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इन पार्ट 4 इट हैज बीन क्लियरली मेंशन्ड दैट इट इज अ इंस्ट्रक्शन टू द गवर्नमेंट. व्हाट फॉर? दैट हाउ व्हाट शुड बी द नेचर एंड शेप ऑफ द पॉलिसीज दैट द गवर्नमेंट इज मेकिंग. वो टाइप ऑफ गवर्नमेंट जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन करूची से पॉलिसी रो टाइप कोन होबा दरकार, से पॉलिसी रो नेचर कोन होबा दरकार. ऑल दोस थिंग्स हैज बीन मेंशन्ड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी. सो इन दिस केस हमें बुझले कि वेलफेयर फंक्शन ऑफ द स्टेट दीटा कथा डिस्कस करली. वन इज द पुलिस फंक्शन एंड सेकंड वन इज द वेलफेयर फंक्शन. बुझेला समस्त को ना काहे को डाउट होची कथा? पुलिस फंक्शन एंड वेलफेयर फंक्शन. Is that clear? Okay. So next thing we will discuss is what is the requirement of the law. एठी law रो requirement कोन हमें बुझवा दरकार कि एठी मो ट्रांजिशन बुझंतु गोटे पर गोटे स्टेप बाय स्टेप हमें बुझिदिबा, एंड इट विल टेक सम टाइम कि अंडरस्टैंड व्हाट इज रिक्वायरमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहले कोन बुझंती, स्टेट कहले कोन बुझंती, ये सब बुझिया पई टिके टाइम लागबो. हमको धीरे धीरे गोटे पर गोटे स्टेप बुझि चलंतु ठीक लागिवो. द नेक्स्ट इज रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ. लॉ कोन पई दरकार हमें एठी देखिले कि फर्स्ट स्टेट आउथर कहूची फर्स्ट स्टेट क्रिएशन हवा पई एस्टैब्लिशमेंट फॉर द स्टेट वी नीड पॉपुलेशन. फर्स्ट पॉपुलेशन दरकार, देन गोटे जियोग्राफिकल टेरिटरी दरकार, देन गवर्नमेंट दरकार. हमको जेतबे तीनटा कथा एस्टैब्लिश होइगला एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी विल हैव अ स्टेट. एंड जेतबे हम पाको स्टेट आसी गला, देन
स्टेट रे दीटा फंक्शन रहिला गोटे हला पुलिस फंक्शन आ गोटे हला वेलफेयर फंक्शन पुलिस फंक्शन ने स्टेट प्रोटेक्शन प्रोवाइड कला सिटीजन मानको को ज्योग्राफिकल टेरिटरी को वेलफेयर फंक्शन ने स्टेट रो बेसिक फंक्शन रहिला डेवलपमेंट केमती गोटे स्टेट रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बा इकोनॉमिक ग्रोथ ही परिबो ये ऊपर डिस्कशन कला वर्तमान when the state is ensured with so much of responsibility at that point of time what we need different type of laws why laws are required because for the to provide rule and regulation jaha अछि ताको स्मूथ वे रे केमते हम सोसाइटी रे प्रोवाइड करि परिबा एति पे हमको लॉ दरकार तो एठी हमर दीटा टाइप रो लॉ रिक्वायरमेंट रहिला द फर्स्ट लॉ व्हिच इज रिक्वायर्ड इज the law that governs the state law governs the state means what the law which governs the state it is state it is different type of function provide karibo state it is different type of activity provide karibo so for that purpose we need a law which will govern the state itself first point second जेतबे स्टेट रो गवर्नेंस हे गला स्टेट रो डिफरेंट एलिमेंट अछंती एलिमेंट बा डिफरेंट मेंबर अछंती जेमति कि द गवर्नमेंट रो तीनटा ब्रांच रहले गोटेला लेजिस्लेचर आ गोटेला एग्जीक्यूटिव आ गोटेला जुडिशियरी इन द सेम वे देयर आर सिटीजन्स इन द इंडिया बा प्रत्येक स्टेट रो सिटीजन रहले सेमान को मैनेज करिया पई सेमान को एडमिनिस्ट्रेशन करिया पई हमको कोन दरकार ना वी नीड what we need in this case we need the different type of laws तो एते दीटा टाइप रो लॉ हमको दरकार हैला फर्स्ट लॉ स्टेट यार मेंबर मन को एडमिनिस्ट्रेशन करिया पई लॉ दरकार बा मेंबर मन को मैनेज करिया पई लॉ दरकार सेकंड स्टेट को मैनेज करिया पई लॉ दरकार तो एते दीटा टाइप रो लॉ विषय हम डिस्कशन करले द फर्स्ट लॉ व्हिच विल गवर्न द स्टेट दैट इज नोन एज द constitution and in the same way the second type of law which is state governance or to manage its own members that is called ordinary law I hope this is clear so ordinary law कहले एटी हमें को टाइप रो लॉ जानिबा ordinary law in this regard means जेमति कि आपन को पाकर होची आईपीसी इंडियन पिनल कोड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एविडेंस एक्ट हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ सिविल लॉ ये सब होचंती ऑर्डिनरी लॉ एंड व्हेन आई टॉक अबाउट द लॉ गवर्निंग द स्टेट को गवर्न करिया पई जो लॉ हमको दरकार दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मतलब हमें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बोली कहउचंती आई होप दिस इज क्लियर द नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशन एंड constitutionalism यार मीनिंग कोन हम बुझिबा द बेसिक मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड constitutionalism बुझिबा पूर्व we need to understand constitution कोन then only we can understand constitutionalism so let's understand the term constitution it means this is called the organic and the fundamental law of the land so what is the meaning of organic law and the fundamental law fundamental law कहले हमें कोन बुझंती and this is the law which is the source of all other laws सोर्स कहले कोन बुझंती ना से लॉ रु कॉन्स्टिट्यूशन ना हमें अदर लॉ को डिराइव करिया इट मींस कॉन्स्टिट्यूशन इज द मदर टू अदर लॉज मींस अदर लॉज आर डिराइव्ड फ्रॉम so that is why constitution is called the fundamental law the next is the organic law organic law रो गोटे सिंपल मीनिंग अछि that is which is competent enough to establish any administrative agency कहले हमें कोन बुझंती ना which provides the function of administration जेमति इंडिया रे मु कहबी दीटा टाइप रो एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी अछंती जेमति कि कोन तो फर्स्ट इज द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी जो जहा को हम कहउछन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया व्हिच इट इंक्लूड्स द पार्लियामेंट लोकसभा राज्यसभा प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स द सेकंड इज द स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी अगेन दिस स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी इट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज आ किछि जगह रे पाइबे विधान परिषद देन एग्जीक्यूटिव हिसाब रे पाइबे चीफ मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड गवर्नर इज देयर सो ये जो ऑर्गेनिक लॉ में देखिले फंक्शन कोन बुझिले ऑर्गेनिक लॉ इट कैन प्रोवाइड और इट हैज द अथॉरिटी टू प्रोवाइड द एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज hope this is clear the meaning of constitution or the organic law कोन और fundamental law कोन I hope बुझि पाले the next it discusses about the conception character organization of the government and the extent of sovereign power यार मीनिंग कोन conception ना मीनिंग होची the idea or the notion of the government the idea or the notion of the government ये include कोन करूची ना गवर्नमेंट रे तीनटा ब्रांच लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी नेक्स्ट होची कैरेक्टर कहले कोन बुझंती ना गवर्नमेंट रो सॉरी स्टेट रो कैरेक्टर कोन जेमति कि इंडियन स्टेट रो कैरेक्टर होची रिपब्लिक sovereign secular democratic ये सब होचंती कैरेक्टर ऑफ द गवर्नमेंट कैरेक्टर ऑफ द स्टेट द नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट रो ब्रांच कोन रहबे जेमति कि लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी बा फेडरल गवर्नमेंट हबो ये सब ऊपर हमर डिस्कशन अछि स्पेशल डिस्कशन हम करबा गोटे पर गोटे टॉपिक सो बेटर वर्तमान खाली कॉन्स्टिट्यूशन हिसाब रे जति कि इंट्रोडक्शन हिसाब रे बुझंतु नेक्स्ट आई विल डिस्कस एवरीथिंग द नेक्स्ट इज एक्सटेंट ऑफ द सॉवरेन पावर extent of the sovereign power कहले हमें कोन बुझंती sovereignty रो मीनिंग होची internally free and externally independent ये sovereignty this is a political idea
this is a political idea. ये meaning कौन कहूची ना internally free रो meaning होची the government of India is completely independent to formulate its own laws. ये निजर law को government of India formulate करि परिबो तो outside force कोनो से outside force एथरे involve वा interfere करि परिबे नाही. First point. Second, externally free रो meaning होची वा externally independent रो meaning होची beyond the geographical territory of India, the government of India is completely independent to formulate its own foreign policies. The India relationship foreign policies कौन हो for the for your let's say with United States of America, with UK, India relationship कौन रहेगा, that will completely be decided by the government of India. That is why this is called externally free. So I hope you are clear with the meaning of internally free and externally independent. Any doubt from this? Any doubt from this? I have many other topics to discuss as well. This YouTube sessions, all these sessions will be short duration sessions, and in those I will try to cover some important topics from the Constitution, from other topics like economics, Indian economics or internal security. So धीरे धीरे हमें कंटिन्यू करिवा गोटे पर गोटे टॉपिक. So as of now वर्तमान पाई ये सेशन को इट रखिवा. The next session we have is at next session हम पाखर अच्छी evening रे अच्छी at 7 p.m. 7 रे अच्छी आज गोटे session. The next session after 7 p.m. Next session अच्छी हम पाखर 9 रे. You can check it out YouTube रे आपण check करि परिबे. And in the same way we will continue different courses for civil service preparation. जो माने Unacademy रे नाहंती, they can join Unacademy Plus by subscribing to Unacademy. And subscription नेला बेले use करंतु reference code EGOS EASYOAS without any space. It's a space no they use करंतु, so that you will be getting 10% discount. So thank you everyone for attending this session. In this session I discussed about the introduction or the definition of constitution. In the next class I will continue from here only. Next class रे मु गोटे पर गोटे टॉपिक एथु डिस्कस करिव. Any doubt from this? Those who are attending कार के डाउट अछि एथि? Anyone having any doubt?